today we are going to come to a more layered understanding, supplemented with case laws as to whatever points we have discussed in the last class with respect to Article 15 and Article 16. Okay, so firstly we come to right to equality. ठीक है, ये डिस्कशन थोड़ा जल्दी जाएगा, रीजन बीइंग कि हम लास्ट क्लास में थोड़े कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी देख चुके हैं. तो आपने देखा कि आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इट बेसिकली पुट्स अ ड्यूटी ऑन द स्टेट टू इंश्योर दैट राइट टू इक्वालिटी एक्चुअली एग्जिस्ट. ठीक है, तो आर्टिकल 14 in very clear terms basically says and puts a duty on the state to not deny to any person equality before law or equal protection of the laws within the territory of India. ठीक है, अब हमें पता है कि इक्वालिटी का मतलब लिटरल इक्वालिटी से नहीं है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली रिजर्वेशन but even special provisions can be made for certain categories of people depending on how that is basically going to further the concept of equality. ठीक है, इसीलिए we have articles 15 and 16 which specifically talk about special provisions for certain classes in certain areas, let's say either in public employment or admission in educational institutions etc. ठीक है, तो आर्टिकल 14 में हम ये देखेंगे कि टेस्ट क्या है ना, कि अगर आप किसी एक ग्रुप को कुछ अलग एडिशनल राइट्स या कुछ डिस्टिंक्ट राइट्स दे रहे हो या कुछ डिस्टिंक्ट प्रिविलेजेस दे रहे हो, तो उसका टेस्ट क्या है, लाइक हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि वेदर दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट. ठीक है, वेदर दिस इज एक्चुअली बीन मेड टू फर्दर द आइडिया ऑफ राइट टू इक्वालिटी और नॉट. ठीक है, तो आर्टिकल 14 में इसके लिए दे हैव the judges have come up with two important tests. One is the test of reasonable classification. ठीक है, कि आप अगर किसी एक ग्रुप को सेग्रीगेट करके कुछ अलग राइट्स या प्रिविलेजेस या कुछ भी दे रहे हो तो क्या वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है. ठीक है, तो पहला टेस्ट तो वो है कि whether something will be reasonable classification or not. Only a reasonable classification will be saved under Article 14. ठीक है, दूसरा है द टेस्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, है ना, कि ये जो लॉ है whether this is arbitrary or not. ठीक है, so that is a wider test and that test has been evolved a little later in time and currently these two tests are basically applied to test any state action on the anvil of Article 14. ठीक है, सबसे पहली चीज हमने देखी कि Article 14 is available to all persons. ठीक है, unlike Article 15 and Article 16 which are only available to the citizens, Article 14 is available to all persons. ठीक है, not just all persons but not just natural persons but artificial persons as well. ठीक है, तो citizens, non-citizens, a company, a corporation, a society registered under the Societies Registration Act, ठीक है, all of them can be covered under Article 14. ठीक है, फिर हमने ये पार्ट भी डिस्कस किया कि आर्टिकल 14 इज द जीनस एंड आर्टिकल 15 एंड 16 आर द स्पीशीज, है ना. इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 14 एक जनरल राइट की बात करता है which is right to equality. Article 15 and 16 on the other hand take that right further and talk about certain spaces and how right to equality will apply there. ठीक है, तो आर्टिकल 15 जैसे बात करता है राइट ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, फिर 15.2 बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस की, 15.3 बात करता है कि राइट टू इक्वलिटी का ही पार्ट है मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, देन मेकिंग प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. ठीक है, तो आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वलिटी की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है उसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन वी सी इन आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16. ठीक है, 16 being much narrower than Article 15 because 16 particularly only deals with areas of public employment. ठीक है, तो Article 14 is called the genus and Article 15 and 16 is the species. ठीक है, you can also understand it like this कि if this circle represents Article 14 then Article 15 and 16 are under this circle. Okay, because they are part of right to equality but they are subsections of the broader understanding of right to equality. ठीक है, आर्टिकल 14 को ये भी बोला जाता है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. ठीक है, रूल ऑफ लॉ जैसा हमने शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि व्हाट डज रूल ऑफ लॉ मीन.
According to AV Dicey, we also saw there are 3 postulates of rule of law. तो अगर आपको MCQ question आता है कि in the Indian Constitution, which of the following articles incorporates the understanding of rule of law, then the answer to that is Article 14. ठीक है, Article 14, क्योंकि आपने देखे हैं AV Dicey के 3 postulates, and you know that Article 14 talks about those same things. ठीक है, it doesn't incorporate the whole or as it is understanding of what Dicey said, but by and large it incorporates the principle of rule of law in the Indian Constitution under Article 14. ठीक है, Article 14 is also modeled on Article 7 of the UDHR 1948. ठीक है, एकदम factual चीजें कभी-कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, so you should remember these. Okay, right to equality, and I think this is again very basic common knowledge that you anyway should know about, is part of the basic structure of the Constitution. ठीक है, आपको पता है कि केशवनंद भारती के केस में कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी चीज को अमेंड कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा भी अमेंड कर सकते हो, सिर्फ एक कंडीशन उन्होंने रखी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते. ठीक है, यू कैन अमेंड द प्रीएम्बल, यू कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, you can amend any other part of the constitution, but you cannot change or alter the basic structure of the constitution. ठीक है, तो right to equality is part of the basic structure of the constitution and that cannot be taken away. ठीक है, तो जब हम EWS वाला challenge देखेंगे, when we will see the case in which the 103rd amendment is challenged, then we will also get to see how does the court interpret it, whether they feel that introducing reservation on economic grounds, whether that violates right to equality or not, that definitely remains to be seen. Okay. Okay. Now we come to Article 14. ठीक है, ये सारा see whatever discussion we are having on Article 14 particularly, that is by and large theoretical. ठीक है, it is theoretical for 2 reasons. One, Article 14 is very vast. Like if you take a commentary, let's say if you take MP Jain or any other book, you will see there are like literally hundreds of pages just on right to equality. ठीक है, so the reason is because Article 14, even though it is very short, there are a lot of case laws on it. Most of them also involve other articles of the Constitution. ठीक है, तो Article 14 के आप generally जो भी cases देखोगे, वो सिर्फ Article 14 के cases नहीं होते, उसमें generally 15 या 16 या 19 या 21, they are generally there in the discussion as well. So whatever understanding we are discussing here is a very reduced version of that. ठीक है, क्योंकि of course there are a lot of case laws which have clarified all these points, and this is how we've been able to kind of condense them in these concepts that we are reading. So all of this has a lot of history, it has a lot of background in the form of case laws, and this is only because of that we have been able to reduce it into a very solid concepts now. ठीक है, so similarly based on those case laws and based on all these readings, Article 14 का जो scope है, that has actually been expanded by the courts a lot. ठीक है, Article 14 के अंदर these doctrines have also been read. ठीक है, जैसे कि concepts like doctrine of promissory estoppel, ठीक है, non-arbitrariness, principles of natural justice. ठीक है, जैसे natural justice का example लेते हैं, because this is something which you will come across when you read administrative law also. So अब Article 14 में, see, Article 14 is very short, right? Like it's barely one line article, but it incorporates all these principles. So natural justice is one of those. ठीक है, तो what is principle of natural justice? Principle of natural justice का मतलब होता है कि किसी भी चीज को डिसाइड करने में अगर स्टेट या एडमिनिस्ट्रेशन, if they are deciding something, or even if the courts or the tribunals are deciding something, then they will be bound by certain basic principles, and those principles are called principles of natural justice. ठीक है, अब Article 14 में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि we will follow principles of natural justice, but Article 14 in general incorporates the idea of right to equality. ठीक है, तो right to equality से ही there are a lot of concepts which are related to it, which further right to equality, and that is why the court has read these concepts as part of Article 14. ठीक है, जैसे principles of natural justice क्या बोलते हैं, 3 चीजें बोलता है basically. पहला बोलते हैं
कि nobody should be a judge in their own cause. ठीक है, कि मतलब कोई अपने ही मैटर में जज नहीं हो सकता. ठीक है, so if you have any interest in the matter, then you cannot be a judge in that matter also, क्योंकि of course you will have biasness in that case. ठीक है, तो इसको रूल अगेंस्ट बायस भी बोलते हैं. सेकेंड होता है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, यानी कि हियर द अदर साइड, कि जब भी आप कोई डिस्प्यूट या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे हो, तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस रिक्वायर्स यू टू हियर बोथ द साइड्स ऑफ द मैटर. ठीक है, सो द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम. थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज स्पीकिंग ऑर्डर्स. स्पीकिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन आप दोगे, whatever is the decision, that decision should have a reasoning. ठीक है, that reasoning should be also specified with that decision. So speaking orders या reasoned decision is the third important aspect of principles of natural justice. ठीक है, तो ये सारी चीजें even though they are not explicitly mentioned in Article 14, they invariably form part of Article 14, and for all purposes they are considered to be, you know, kind of coming from Article 14. ठीक है, फिर Article 14 में जैसा कि हमने देखा, there are two terms or two phrases that have been used, that the state shall not deny to any person equality before law and equal protection of the laws. ठीक है, अब आप जब केस लॉज अगर कभी पढ़ो ध्यान से, then you will see that the court in various cases have come to the conclusion that both these terms that they're not that mutually exclusive. ठीक है, equality before law and equal protection of the laws, ऐसा नहीं है कि these two terms mean two different things. Okay, but generally ऐसा माना जाता है कि equality before law is actually a negative concept, and यहाँ पे there is no special privilege in favor of anyone, and this is why it is called a negative concept as opposed to equal protection of laws. ठीक है, क्यों? क्योंकि the wording that has been used in Article 14 clearly says that the state shall not deny to any person equality before law. ठीक है, अगर कोई स्टेट के पास आदमी जाता है, then they are entitled to equality before the law. That is to say that nobody will be given any special favors or any special treatment so far as the application of law is concerned. ठीक है, दूसरा जो concept है, that is also a related concept. ठीक है, academically speaking, they do not have a separate or like a mutually exclusive scope. They both mean one and the same thing. ठीक है, equal protection of the laws को generally माना जाता है कि this is more of a positive concept, यानी कि ये state के ऊपर duty लगाता है that the state has to equally protect everybody and there has to be equal protection of laws. ठीक है, so but अगर आप when you will actually read case laws and when you will actually see as to how Article 14 is applied, then you will see there is not much difference. Like the court does not go into the issues of whether it is equality before law or equal protection of laws, which one of them is being violated. Okay? So they basically mean one and the same thing, but equality before law is generally considered to be a negative concept, whereas the other one is considered to be a positive concept. Okay? But practically speaking, it does not really create much of a difference. Okay? It's just an academic debate. Okay, now we come to the first test. ठीक है, अब हमने देखा कि हमें पता है कि right to equality का मतलब literal equality नहीं होता है. ठीक है, mathematical equality या literal equality की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि there is difference in opportunity to people. ठीक है, not everybody comes from the same privilege or from the same opportunities. And this is why it is the responsibility of the state to ensure that right to equality actually has some meaning. Okay? So that it's not just a literal right to equality, but it's actually meaningful equality. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला जो टेस्ट कोर्ट अप्लाई करती है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ रैशनल या रीजनेबल क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 14 की एक और अंडरस्टैंडिंग है दैट लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक. ठीक है, मतलब जो लोग इक्वल हैं स्टेटस में या अपॉर्चुनिटी में, व्हाटएवर, दे शुड बी ट्रीटेड अलाइक, बट अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड अलाइक. ठीक है, so equals have to be treated alike. For example, if these are
two persons, person A and person B, and if they are equals, then the law should equally apply to them with no modification, with no special privileges to either of them. But if A and B themselves are not equal, then applying the law equally on them would be unjust, and that in itself would be unequal. Okay? So that is exactly what Article 14 is based on, that you will treat equals alike and you will not treat unequals by the same law. Okay? So that basically gives rise to the first test, that is the doctrine of rational or reasonable classification. ठीक है? अब ये डॉक्ट्रिन आपको यही बताती है कि आप अगर इक्वल्स और अनइक्वल्स के बीच में डिफरेंस कर रहे हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल सेम चीज लेते हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी. If you are making two different laws applicable on them, then you will have to defend that decision. ठीक है? कि on what basis are you treating these two people differently? ठीक है? तो आपको वो डिफेंड करने के लिए कि आप इन दो लोगों को डिफरेंट लॉज से या डिफरेंट प्रोविजन से क्यों ट्रीट कर रहे हो, या आपने किसी एक के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों बनाए हैं, फॉर दैट यू रिक्वायर द टेस्ट ऑफ रीजनेबल और रैशनल क्लासिफिकेशन. ठीक है? एक और बहुत ही लैंडमार्क सा स्टेटमेंट होता है कि आर्टिकल 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन परमिटेड है बट नॉट क्लास लेजिस्लेशन. ठीक है? अब इसका क्या मतलब होता है ये भी समझ लेते हैं. ठीक है? क्लास लेजिस्लेशन, plain and simple, means that you have created a class and you are applying a particular law on it. Okay? It actually literally means exactly this, that you have created a class. Whether that class has any reasonable basis or not, you have not looked into that. Okay? You have simply created a class. There indeed is a class and you have made a law applicable to them. Okay? For example, एक hypothetical ले लेते हैं कि what do you call, what kind of an example should we take? ठीक है? किसी जेंडर बेस्ड लॉ की अगर आप बात कर लो, ठीक है, कि you are taking the category of men and you are making a special law for them. ठीक है? आपने women और men के बीच में men को segregate किया. They are definitely a class, right? Based on their gender, men are a class. ठीक है? There's absolutely no doubt about it. So you have segregated them and you have made a law for them. ठीक है? तो ये क्या होगी? ये क्लास लेजिस्लेशन होगी, क्योंकि आपने एक क्लास को सेपरेट करके उसके लिए लॉ बना दिया है. दैट इज फोरबिडन अंडर आर्टिकल 14. ठीक है? व्हाट इज नॉट फोरबिडन इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन. ठीक है? कि क्लास तो आप कर सकते हो, ठीक है, आपने जो क्लास बनाई है, अब आपको डिफेंड करना है कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, कि व्हाई हैव यू मेड दिस स्पेशल लॉ फॉर मेन. नाउ यू हैव टू बेसिकली डिफेंड as to why men are capable, or why are they deserving of a special law, like what is the reason behind it. Okay? So only when you are able to defend a class based on reasonable classification, only then you can protect such special laws. Okay? On the other hand, for example, agar there's a category of women and for them, let's say some special law has been made, not even special, like let's say Domestic Violence Act. ठीक है? अब the reason as to why it has been made for women specifically is because they are the ones who have historically and even currently been subject to domestic violence, right? So there's a reason as to why this law has been enacted for them, and there is a object that is being sought to be achieved. ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि आपने जो ये क्लास अलग से बनाई है, ये क्यों बनाई है, इसका क्या रीजन है. ठीक है? दूसरा आपको डिफेंड करना होगा कि जो आपने लॉ बनाया है, क्या वो लॉ उस ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है जिसके लिए आपने एक्चुअल, जिस प्रॉब्लम के लिए आपने ये लॉ बनाया है. ठीक है? सो दैट विल बी रीजनेबल क्लासिफिकेशन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रीजन, right? Like it's a classification which is actually based on some reason, and it's not just a class legislation. A class legislation could be anything. For example, tomorrow there's a policy of recruitment, let's say for judiciary, that only candidates who have graduated from NLUs, only they will be eligible to sit for judicial services. ठीक है? अब क्या ये
क्लास लेजिस्लेशन है? यस, बिकॉज स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड इन एनएलयूज फॉर्म अ सेपरेट क्लास. आप उसे एक क्लास की तरह सेपरेट कर सकते हो, दे आर आइडेंटिफाइबल, राइट? बट क्या इसका इससे कोई लेना देना है? इज देयर अ रीजन एज टू व्हाई यू आर मेकिंग अ स्पेशल लॉ फॉर देम? ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव दैट इज बीइंग sought टू बी अचीव्ड बाय carving out this class? ठीक है, तो दैट इज एग्जैक्टली द टेस्ट कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्पेशल क्लास को अलग से क्लासिफाई करने का. ठीक है, तो क्लास तो कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग कुड बी अ क्लास, जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दैट इज अ क्लास. ठीक है, लेकिन आप हर क्लास के लिए लेजिस्लेशन नहीं बना सकते अलग से, बिकॉज दैट विल वायलेट राइट टू इक्वालिटी. ओके, आप सिर्फ उन क्लासेस के लिए रिजर्वेशन नहीं, आप सिर्फ उन क्लासेस के लिए अलग लेजिस्लेशन या अलग प्रोविजंस बना सकते हो जिसका कोई रीजनेबल बेसिस हो. ठीक है, तो इसी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ रैशनल या रीजनेबल क्लासिफिकेशन. ओके, दैट इज वन ऑफ द टेस्ट, दैट इज नॉट द ओनली टेस्ट. ठीक है, माइंड यू, ऐसा नहीं है कि अभी कोई भी लॉ अगर चैलेंज होगा तो सिर्फ आपको ये वाला टेस्ट देखना है. ठीक है, there is another test which is more recent and which is considered to be a far better test than the test of reasonable or rational classification. ठीक है, both of them apply. ऐसा नहीं है कि किसी एक केस में एक ही टेस्ट अप्लाई होगा, both can be applied. ठीक है, both can be tested कि whether this law or provision is violating any of the tests which have been laid down. Okay, so article 14 forbids class legislation but not reasonable classification. Class legislation means legislation differentiating between the same class of persons. Okay, whereas classification is an arrangement of things into groups or classes, usually in accordance with some definitive scheme. Okay, classification has to be on reasonable grounds, जैसा कि हम already देख चुके हैं. Okay, now we actually come to the test कि test के दो principles क्या कहते हैं. Okay, R.K. Dalmia versus Justice Tendulkar was the case in which the test was actually laid down, और उसके बाद वो हजारों cases में apply हुआ है. So definitely there are a lot of cases. Okay, but we are only concerned with like a few of them because these questions generally do not come anymore. है ना, ये सबको establish हो चुका है कि ये test है, इसमें ऐसा कुछ debate नहीं है. Okay, now what is the test? There are two principles. First is that the classification should not be arbitrary, artificial, or evasive. It must be based on intelligible differentia which distinguishes persons grouped together from those who are left out. ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि पहली बात तो आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हो, आप जो एक अलग क्लास कार्व आउट करके उसे अलग कुछ भी उसके लिए अलग बना रहे हो, तो पहली बात तो वो जो क्लास है वो अपने आप में इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड होनी चाहिए. ठीक है, ये एक टर्म है जो वो यूज करते हैं, जिसका मतलब एसेंशियली ये है कि द पर्सन्स हु आर इन दिस क्लास दे आर समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द वंस हु आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्लास. ठीक है, तो बेसिकली जो भी क्लासिफिकेशन है इट शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, आर्टिफिशियल और इवेसिव. ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं मेन और वुमेन का. जैसे ये हमने एक क्लासिफिकेशन किया फॉर women and we have made let's say the DV Act for them. ठीक है, तो इसको हम reasonable classification तभी कह सकते हैं when we can justify that this classification is based on intelligible differentia, meaning thereby the reason as to why we are only giving this protection to women and not men is clear. Okay, so there should be some distinguishing feature between who has been included in this group and who has been excluded from this group. Okay, second is the differentia must have a reasonable or rational nexus with the object sought to be achieved. ठीक है, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक अब्यूज. ठीक है, इसीलिए आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाए हो, जहां पे यू आर पेनलाइजिंग अब्यूज बाय द हस्बैंड और द इन लॉज और whoever are the accused in the domestic violence act. ठीक है, so the differentia, that is this classification, should have a reasonable or a rational nexus. ठीक है, अब ये तो बात हुई reasonable nexus की, कि जैसे DV Act में there is a reasonable nexus as to why women are the ones who are considered under the DV Act for protection. ठीक है, now let's come to another situation wherein there is a classification but the classification has no reasonable nexus. ठीक है, for example, बहुत ही लैंडमार्क केस है, आपने पढ़ा होगा, एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा, है ना, सबने पढ़ा होगा, आई होप सो. अब इस केस में क्या था कि एयर इंडिया की जो पॉलिसी थी
वो ये कहती थी कि जो एयर हॉस्टेस है ना, if the air hostess gets pregnant after she's hired, then she can be fired from her job. Okay, so she can basically be fired from her job for being pregnant. Okay, so this rule was only applicable to women. Okay, it was only applicable to women who are married and who get pregnant, and it was obviously not applicable to men. Okay, तो यहाँ पे exactly article 14 के तहत ये challenge हुआ था कि whether this law, this rule which has been there in the recruitment policy of Air India, whether this is violating article 14 or not. ठीक है, तो कोर्ट ने यही वाला टेस्ट अप्लाई किया, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, एंड दे फाउंड कि देयर इज नो रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग sought to be achieved. ठीक है, why are you segregating women? It has got nothing to do with their ability to do the job, right? And men are not being treated the same way under the same law. Like for example, if a man gets married and if he is about to become a father, or if he becomes a father, he is not susceptible to the same set of rules or regulations. Okay, so the court found this distinction to be not having any reasonable nexus with the object that is being sought to be achieved. ठीक है, तो ऐसे कई सारे examples हैं that you will keep on seeing even till date, in which the court will analyze कि whether there's any reasonable nexus with the object that you're seeking to achieve or not. ठीक है, तो ये तो पहला टेस्ट हुआ. Okay, now we come to the problems with the test. ठीक है, the problem is simply this कि you cannot overemphasize on this doctrine. ठीक है, because it is not sufficient to identify newer threats on right to equality. ठीक है, तो कोर्ट ने इन रेफरेंस स्पेशल कोर्ट्स बिल के केस में क्लियरली बोला कि ओवर एम्फेसिस ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी देयर, otherwise it will defeat the purpose of equality in itself. ठीक है, so with time it was realized by the judges of the court only कि this doctrine is important, yes, but it cannot be overemphasized. Like every action cannot just be tested on this doctrine to see whether that action is justified or not. ठीक है, in many cases the classification may be able to satisfy this test, but it may still not be in line with right to equality. ठीक है, इसीलिए to basically address this issue, the second test was laid down, that is the test of state action, कि whether the state action is arbitrary or not. ठीक है, तो वो एक better test है, because that also looks into why the state is actually enacting such special law or such different treatment to a certain categories of people. Okay, so it basically puts the onus on the state. Okay, now coming to a few other things. Article 14 condemns discrimination by both substantive and procedural law. ठीक है, discrimination substantive law में भी हो सकता है, procedural law में भी हो सकता है. अनवर अली सरकार के केस में कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि the law granting arbitrary power to the government to select cases to be tried by special provision was held to be void. ठीक है, इसमें क्या था, अनवर अली सरकार के केस में I don't remember which law was being challenged, but the issue was कि वो जो law था, it gave power to the government. ठीक है, किस चीज की पावर, कि गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि इन दो प्रोसीजर्स में से किसी भी केस में कौन सा प्रोसीजर अप्लाई होगा. ठीक है, कि स्पेशल जो प्रोसीजर है विच वाज अ हार्शर प्रोसीजर, उसके लिए कोई सेट गाइडलाइंस नहीं थी कि ये वाले ऑफेंसेस इस प्रोसीजर से ट्राई होंगे, बट द डिसीजन मेकिंग वाज गिवन टू द गवर्नमेंट. ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि दिस इज discrimination on procedural grounds, and that is why Anwar Ali Sarkar's case is a landmark case which basically highlights that Article 14 does not only apply to substantive areas of law but also procedural law. Okay, so essentially this applies to both the things. ठीक है, फिर और भी चीजों पे आते हैं. There's one very landmark case of चरणजीत लाल चौधरी versus यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे कोर्ट ने बोला था कि एक सिंगल पर्सन भी क्लास हो सकता है. ठीक है, क्योंकि हमने देखा दैट आर्टिकल 14 के अंदर देयर कुड बी रीजनेबल क्लासिफिकेशन. ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि वी विल ट्रीट एवरीबॉडी अलाइक. देयर कुड बी सर्टेन क्लासेस व्हिच वुड बी आइडेंटिफाइड एंड दे वुड बी गिवन सम स्पेशल और अ डिफरेंट ट्रीटमेंट. ठीक है, तो चरणजीत लाल चौधरी के केस में कोर्ट ने बोला कि वन पर्सन में ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास. ठीक है, इस केस में कोर्ट ने बोला था
कि the prime minister in itself is also a class of his own, and that is why a special law or a different law can also be there which will only apply to one person. Okay? So a law may be constitutional even if it applies to a single person. Even a single individual may be treated as a class by himself. Okay? Now we come to न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, बहुत सारे केसेस के बाद ये अंडरस्टैंडिंग आई कि आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 का जो स्कोप है वो काफी वाइड है. ठीक है, एंड सी दैट इज समथिंग व्हिच वाज रियलाइज्ड, सॉरी, that is something which was realized anyway for all fundamental rights, not just article 14, but major changes happened in the understanding of articles 19, article 21 as well. ठीक है, शुरू के केसेस में 1950s में, 1960s में the understanding was not there. ठीक है, उस टाइम पे माना जाता था कि फंडामेंटल राइट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, कि अगर आर्टिकल 14 किसी चीज से डील कर रहा है तो आर्टिकल 14, 19 और 21 का जो स्कोप है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ठीक है, तो पहले उनका मानना था कि ये होता है, 14 अलग है, 19 अलग है, 21 अलग है, इनका स्कोप अलग अलग है एंड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है, दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग in the 50s and the 60s. Okay, but then of course the understanding got refined. There was a lot of PIL in the 1970s and the 1980s, and that was truly a golden time for the interpretation of fundamental rights. Okay? Why? Because it expanded the scope of fundamental rights. A lot of fundamental rights were read in Article 14, Article 19, and Article 21. And one of the most important things happened, that the Supreme Court came to the realization that these fundamental rights are related to each other. ठीक है, ऐसे कोई वैक्यूम में नहीं है कि आर्टिकल 14 का अपना स्कोप है, आर्टिकल 19 का अपना, आर्टिकल 21 का अपना, और ये तीनों कभी कोइंसाइड नहीं हो सकते. ठीक है, so that understanding came a little later. So basically in the 1970s particularly, there were important case laws, particularly the case of Menka Gandhi versus Union of India, which was a landmark case on this particular point, कि article 14, 19 and 21 are not mutually exclusive, but they are related to each other, they are inclusive, and they form something called the golden triangle. ठीक है, so that understanding that fundamental rights are not isolated, they are not islands which are not related to each other, that came a little later, and that is something which is credited to the case of Menka Gandhi versus Union of India. ठीक है, उसी टाइम पे another understanding of equality came around, which is known as the new concept of equality. That is the case of E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu. ठीक है, MCQs में काफी पूछा जाता है, very important judgment. इस केस में कोर्ट ने यही बात हाईलाइट करी थी कि आर्टिकल 14 के लिए वी हैव टू अप्लाई अ डायनेमिक अप्रोच. ठीक है, मतलब कि आर्टिकल 14 को वी कैन नॉट नैरोली इंटरप्रेट, इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड टेकिंग इनटू अकाउंट the other fundamental rights, and plus the scope of article 14 can never be narrow. Okay, so E.P. Royappa, very important judgment. एक और important finding उन्होंने दी और बोला कि equality is antithetic to arbitrariness. ठीक है, ये एक्चुअली मेनका गांधी के केस में बोला था. ठीक है, कि इक्वालिटी और arbitrariness कभी साथ साथ नहीं जा सकते. ठीक है, अगर स्टेट arbitrarily कुछ भी अप्लाई कर रहा है so that will always be against the understanding of equality, and that is how the test of arbitrariness came to be about, because Menka Gandhi basically highlighted the effect of arbitrary state action. ठीक है, I hope आपको मेनका गांधी के फैक्ट्स पता हो. मेनका गांधी के केस में मेनका गांधी, her passport was impounded by the passport authorities. ठीक है, उनको कहीं ट्रैवल करना था out of the country, and her passport was impounded by the passport office. ठीक है, so she went to the Supreme Court citing a challenge to this particular impounding of her passport without giving her any reasons, saying that this violates her right to equality, that is article 14 as well as article 21 as well as article 19. ठीक है, उनका कहना था कि right to move, right to go abroad, all of this is my fundamental right under article 21. ठीक है, so the court agreed with that. The court in that case realized that Menka Gandhi was a very easy political target, and for political reasons her passport indeed was impounded, and that did show the state's arbitrary action. कि state अगर चाहे
तो किसी पे भी आर्बिट्रेरिली लॉ अप्लाई कर सकता है, ठीक है. सो मेनका गांधी का केस वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द whims and fancies of the state and how they can basically take away your fundamental rights if they do not agree with you. So मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में arbitrariness as a ground against equality was basically ceded, and then in later cases it was developed as a full-fledged doctrine on which all and any state action can now be challenged, ठीक है. अब तो एक और नई अंडरस्टैंडिंग आई है जिसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी. जैसे अगर आप अभी नए वाले जजमेंट्स पढ़ो, ट्रिपल तलाक, सबरीमाला, ऑल ऑफ दोस, ठीक है, they employ this particular term that the provision or the whatever is being challenged is manifestly arbitrary, ठीक है. तो वो भी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जो when we actually come to those cases we will definitely have. But all in all, आर्टिकल 14 काफी डायनेमिक है, उसका स्कोप पहले काफी नैरो था, इंटरप्रेट हुआ, and then the courts realized that we need to have a more dynamic approach, and then the scope of the fundamental rights was not only widened but they were also said to be now related to each other, ठीक है. So a challenge to an action on the ground of article 14 will also invite a challenge on the grounds of article 19 and possibly article 21 as well, okay, ठीक है. So this is the doctrine which has come up, that if state action is arbitrary, then even the doctrine of classification would not be able to save it, ठीक है. मतलब doctrine of classification is a valid test still, but that is not the only test. Even if something does satisfy the doctrine of classification, it can still be tested on the ground that it is arbitrary, okay. So yeah, that sums up our discussion on article 14, ठीक है. article 14 बहुत vast है, इस पे और discussion भी हो सकता है. The reason why we are restricting ourselves is because of its importance for a competitive exam, ठीक है. competitive exams में आप सिक्योर मतलब सब्जेक्टिव आंसर तो आपको नहीं लिखना है इस पे, राइट, लाइक neither do you have to write research papers, and this is why we can't really go into a lot of depth of article 14, ठीक है. but we will definitely come back to it when we come to case laws, and even article 14 will always be there even when you are discussing article 15, 16, 17, 18, 19, 21. Whatever article you discuss, the understanding of article 14 will always have to be there, ठीक है. चलो अब आते हैं आर्टिकल 15 पे, ठीक है. आर्टिकल 15 एक बार ब्रीफली देख लेते हैं. 15(1) बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की. 15(2) बात करता है कि पब्लिक प्लेसेस में, कुछ पब्लिक प्लेसेस में कोई भी सिटीजन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन 5 ग्राउंड्स पे. 15(3) बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन की. 15(4) बात करता है एक जनरल स्पेशल प्रोविजंस फॉर SCBCs की. एंड 5 बात करता है स्पेशल प्रोविजंस in matters of admission to educational institutions, ठीक है. 15(6) हमने देखा, the most recent amendment talks about the same protections but to EWS, ठीक है. so that is essentially article 15. now article 15 is also very straightforward. article 15 पे भी कुछ important cases हैं, वो generally उसी बात पे हैं कि right to admission है ना. 15(4) पे by and large आपकी जितनी भी litigation है that will be there. Sometimes there'll also be case laws on article 15 clause 3, ठीक है. जैसे अभी recently there was a case 2022 में ही जहां पे it was a case challenging the commissioner's order in the state of Maharashtra with respect to orchestra bars, ठीक है. वहाँ महाराष्ट्र में जो orchestra bars हैं वहां पे it put restrictions on the number of people who can be there in that orchestra bar, who can perform at any time, and out of them only 4 could be women, ठीक है. 8 would be the total number, 4 could be men, 4 could be women, ठीक है. so from a very weird logic, the Supreme Court did involve article 15 clause 3 also on that, saying that putting such a restriction is violative of article 15 clause 3, ठीक है. I don't agree with the reasoning given, but ठीक है, we'll come to that also, okay. but all I'm saying is कि article 15(3) keeps on coming whenever you see gender based laws or any kind of provision which either discriminates on the ground of gender or gives any special protection to women on, you know, whatever grounds. So 15(3) के cases you will keep on seeing. Okay, now we come to right to equality under article 15. Okay.
अब ये सारा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आर्टिकल 15 इज अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14. ठीक है, हमें पता है आर्टिकल 14 जीनस है, 15 और 16 स्पीशीज है. ठीक है, अब when a law is made violating article 15, it cannot be said, it cannot be reasonable classification under article 14. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आर्टिकल 15 में देर आर 5 ग्राउंड्स है ना ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, that you cannot discriminate between citizens on these grounds, only on these grounds. जैसे कि सेक्स के ग्राउंड पे आप सिर्फ सेक्स के ग्राउंड पे लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, neither on the basis of religion, caste, place of birth, etc. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि इफ अ लॉ इज मेड वायलेटिंग आर्टिकल 15, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15 ने कहा कि आप सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन यू कैनॉट डिस्क्रिमिनेट. ठीक है, so if let's say there's a law which is made which gives certain different protections to one religion and one religion only and only on that ground, then even article 14 will not be able to save it. ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 में क्लियरली लिखा है कि स्टेट इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. ठीक है, तो आप उसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन के टेस्ट के अंदर लाके वैलिडेट नहीं कर सकते हो. ओके, बट प्लीज अंडरस्टैंड वहां पे कीवर्ड है ओनली, कि आप सिर्फ इन ग्राउंड्स पे नहीं कर सकते. जैसे कि आपको पता है कि सेक्स के ग्राउंड्स पे बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. ठीक है, women could definitely be given some additional rights which men don't have. So that indeed is discrimination, that is very true, but it is reasonable classification. ठीक है, and it is not only on the basis of sex. ठीक है, if for women a special law is being made such as the DV Act, that is not solely on the account of the fact that they are women. It is because there is a history, there's evidence of women being subject to domestic violence and men not being subject to domestic violence. This is why the law only protects women. Okay? So there is a reason outside just the sexual classification. Okay? So all in all, अगर आप आर्टिकल 15 को वायलेट करके कोई लॉ बनाओगे, so that cannot be validated under article 14 by saying that this is a reasonable classification. ठीक है, आर्टिकल 15 नॉन सिटीजन्स पे भी अप्लाई होता है, आर्टिकल 15 सिर्फ सिटीजन्स पे अप्लाई होता है. ठीक है, तो ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ओके, हाँ ठीक है, ये भी हमें पता है. क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट, क्लॉज 2 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय प्राइवेट पर्सन्स एज वेल. ठीक है, 15(3) में स्पेशल प्रोविजंस की बात की है. स्पेशल प्रोविजंस किसी भी टाइप के हो सकते हैं. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, it could be in the form of any other thing also, let's say concessions or beneficial schemes or scholarships. ठीक है, so it could be in any form. 15(3) में अगर special provisions term use हुआ है तो that does not only imply reservation. ठीक है, हाँ फिर हम आते हैं फर्स्ट केस पे. ठीक है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि 15(4) जो है that has been added by the first amendment. ठीक है, पहले से it was not there in the constitution and it was only added later on. And the reason why it was added is the case of State of Madras versus Champakam Durai Rajan. Because in this case, the Madras government issued an order that is known as the communal government order, allocating seats in medical colleges community wise. ठीक है, अब आपको पता है कि आज के डेट में that is possible. Giving reservations or reserving seats on the basis of caste or community is now permissible because we have Article 15(4). ठीक है, but before 15(4) was there, the courts refused to accept this communal government order. They said that this order violates Article 29 Clause 2, which guarantees that no citizen will be discriminated in matters of admission in educational institutions on the grounds which are given in 29(2). ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कास्ट के ग्राउंड पे आप लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि who will be admitted and who will not be admitted. ठीक है, so that is why the government order was declared to be invalid by a 7-judge bench. ठीक है, उनका मानना था कि this is something which cannot be permitted under Article 29(2), and this is why the first amendment happened in the year 1951 to add Article 15(4), so that now the government can actually make special provisions for any purpose, not just for admission in educational institutions, but for the advancement of SCBCs in any case. Okay,
So this is the important case that can be asked. ठीक है, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि 15(4) में सिर्फ डिस्क्रेशन की बात है, ये सिर्फ एक इनेबलिंग प्रोविजन है, ठीक है, कोई एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है. A person, let's say a person thinks that he falls in the socially and educationally backward class, they cannot go to the court and say that ask the government to make special provisions for us because it is our fundamental right, ठीक है. That is not how it can work because it is only a matter of discretion and no mandamus can be issued to provide for such a relaxation, ठीक है. तो 15(4) हो जाए, चाहे 15(5) हो, चाहे 16(4) हो, 16(4)(a) हो, all of these are only enabling provisions, ठीक है. They are not absolute rights because they depend on the discretion of the state, ठीक है. स्टेट के ऊपर है, अगर स्टेट प्रोविजंस बनाएगा तो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है. फिर अगर स्टेट ने बनाया और तब उसके बाद अगर आपको वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो देन यू कैन अप्रोच द कोर्ट्स फॉर देयर एनफोर्समेंट. ओके, फिर हम आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस पे. इंपॉर्टेंट पॉइंट है विथ रेस्पेक्ट टू बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है. कि we know that socially and educationally backward classes or SCs and STs can get the benefit under 15(4) and 16 or 15(5), ठीक है. तो कोर्ट ने दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वलसम्मा पॉल वर्सेस कोचीन यूनिवर्सिटी एंड संध्या ठाकुर वर्सेस विमला देवी, जहां पे कोर्ट ने कहा कि इफ अ वुमन इज नॉट बिलोंगिंग टू अ बैकवर्ड क्लास बाय बर्थ, then after marriage she will not be entitled to claim the benefit of reservation, ठीक है. तो मैरिज के बाद ऐसा नहीं है कि now she will be considered as a backward class person, okay. रीजन कोर्ट ने डेफिनेटली दिया कि बैकवर्डनेस इज अ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है. इट डेट्स बैक to your birth because it is associated with your birth. You are considered to be belonging to a certain caste because you are born in that caste, okay. The stigma attached to it is because you are born in it, okay. So basically ये कोई status नहीं है जो आप achieve कर सकते हो. So this is why the court clarified that if you are not born as a person belonging to a backward class, then you have not faced those hardships, you have not faced discrimination or stigma on that ground which is attributable to persons belonging to this caste because of their birth, okay. So you cannot achieve this status and that is why after marriage also you cannot claim this as being a person belonging to a backward class, okay. अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है. क्योंकि यही इकलौता टर्म है विच हैज बीन यूज्ड, ठीक है. क्या टर्म्स यूज किए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, एससीज एंड एसटीज, ठीक है. अब ये समझाने के लिए आई नीड टू गो अ लिटिल फर्दर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस पे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास पे देयर आर टू इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, 2018 and 2021, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021, ठीक है. अब देखो 2018 में जो अमेंडमेंट आया उन्होंने डिफाइन किया कि हु आर एससीबीसीज, ठीक है. डिफाइन किया और ले डाउन किया कि हु विल डिटरमाइन एससीबीसीज, ठीक है. जैसे अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, एससीज और एसटीज के केस में, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केस में आर्टिकल 366 में सबसे पहले तो दे आर डिफाइंड कि हु आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड हु आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है. फिर 341 342 में उसकी उनकी वो दे रखी है कि कौन इन्हें स्पेसिफाई करेगा कि हु विल बी शेड्यूल्ड कास्ट, हाउ विल दे बी स्पेसिफाइड, द प्रेसिडेंट विल स्पेसिफाई, ठीक है. प्रेसिडेंट एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें वो स्टेट वाइज बताएंगे कि इस स्टेट में ये शेड्यूल्ड कास्ट है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक है. उस लिस्ट को पार्लियामेंट चाहे तो अमेंड कर सकती है, ऐड कर सकती है, वेरी कर सकती है, ठीक है. लेकिन लिस्ट बनाने की जो पावर है वो है प्रेसिडेंट के पास, ओके. तो ये जो पोजीशन थी, this has always been clarified with respect to SCs and STs in the constitution itself, ठीक है. हम आएंगे उन प्रोविजंस पे भी, we will come. लेकिन अगर हम SCBCs की बात करें, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, तो इसके लिए सबसे पहले तो कोर्ट ने कुछ टेस्ट ले डाउन किए, ठीक है. क्यों? क्योंकि एससीज कौन होंगे, एसटीज कौन होंगे, ये हमें पता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बता दिया है कि ये कौन होंगे, ठीक? कैसे डिटरमाइन होंगे, दैट हैज आल्सो बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन.
But so far as socially and educationally backward class is concerned, there is no clarity as to who they are and how will they be defined. Okay? So in various cases, particularly definitely in the case of Indra Sawhney, क्योंकि इंदिरा सोनी ने ये सारे इश्यूज को क्लैरिफाई किया था, कोर्ट ने बताया कि SEBCs कौन होंगे, ठीक है, किस टाइप की बैकवर्डनेस होनी चाहिए फॉर एनीबडी टू बी क्लासिफाइड और एनी कास्ट टू बी क्लासिफाइड एज SEBC. ठीक है, तो पहले तो कोर्ट के डिसीजंस आए, यानी कि इंदिरा सोनी का मोस्टली, क्योंकि उन्होंने उसमें क्लैरिफाई कर दिया कि हु विल बी SEBC. तो क्लैरिफिकेशन आया कि जो बैकवर्डनेस होगी दैट विल बी बोथ सोशल एज वेल एज एजुकेशनल. ठीक है, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू विल सी इन आर्टिकल 16, क्योंकि आर्टिकल 16 में जो टर्म यूज हुआ है वो है बैकवर्ड क्लास, है ना. वहां पे उन्होंने कोई एडजेक्टिव्स नहीं लगाए हैं कि बैकवर्ड क्लास किस टाइप की बैकवर्ड क्लास. ओके, तो 16 की जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल 15, क्योंकि आर्टिकल 15 में जो बैकवर्डनेस है वो सोशल प्लस एजुकेशनल होनी चाहिए. ठीक है, उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई होगा कि विच कास्ट्स विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ SEBC. ठीक है, कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि पॉवर्टी या फिर इकोनॉमिक स्टेटस कैन नॉट बी द सोल टेस्ट ऑफ बैकवर्डनेस. कास्ट may be a relevant factor, but this also cannot be the sole criteria. ठीक है, caste can even be the starting point of it, कि you can ascertain whether somebody would be an SEBC or not based on their caste, but that alone cannot be a relevant factor. Social and educational backwardness also has to be seen. ठीक है, SEBCs जनरली आपके OBCs होते हैं, जिनको आप जनरल पार्लेंस में अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जानते हो. दैट दोज आर बेसिकली SEBCs. ठीक है, पर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है. ठीक है, ये हमने कॉमन पार्लेंस में अडॉप्ट कर लिया है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है. ओके, 2018 में द पार्लियामेंट इनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड दे एडेड the definition in article 366 for SEBC. ठीक है, उन्होंने डिफाइन किया कि SEBCs कौन होंगे. एडिशनली उन्होंने एक आर्टिकल 342A भी ऐड कर दिया बताने के लिए कि SEBCs की जो लिस्ट है वो कौन और कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो अब क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने डिफाइन तो कर दिया और उन्होंने कह दिया कि प्रेसिडेंट विल मेक दिस लिस्ट एंड द पार्लियामेंट विल बी एबल टू अमेंड इट. ठीक है, बिल्कुल जैसा SCs और STs के केस में था, एज इट इज उन्होंने SEBCs के लिए भी क्राइटेरिया रख दिया. नाउ द प्रॉब्लम हैपेंड बिकॉज जो SEBCs होते हैं वो स्टेट आइडेंटिफाई करती थी अभी तक, है ना. इसके पहले तक बिफोर 2018, बिफोर दिस अमेंडमेंट केम, स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कौन SEBC है और उस हिसाब से वो उन्हें रिजर्वेशन देते थे जो भी उनको करना है. ठीक है, but now after 342A the matter went to the Supreme Court in a couple of cases, the most important being the Maratha reservation case, जो आपने I hope सुना, which is a 1.5-year-old judgment. उस केस में कोर्ट के पास चैलेंज था कि क्या स्टेट डिसाइड कर सकती है कि कौन SEBC है. नाउ आफ्टर द 2018 अमेंडमेंट, डज द स्टेट हैव द पावर टू chalk out the list or say who is an SEBC for their particular state? तो कोर्ट ने कहा नहीं, states cannot do that now because after the 2018 constitutional amendment, after the addition of 342A, it is only the president who has the power to chalk out this list, and only the parliament has the power to add to it or delete or modify whatever they want to do from it. ठीक है, but the states do not have a power. तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था कि 342A ने स्टेट्स की पावर ले ली है जो उनके पास अभी तक थी. नाउ स्टेट्स डू नॉट हैव दिस पावर ऑफ एक्चुअली लेइंग डाउन हु इज एन SEBC फॉर देम. ओके, तो इसको अंडू करने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट की ये इंटेंशन कभी नहीं थी, उनसे शायद ड्राफ्टिंग मिस्टेक हो गई जहां पे उन्होंने जो ये 2018 का अमेंडमेंट था उससे क्लियरली वर्ड नहीं किया कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, एंड पॉसिबली बिकॉज ऑफ दिस the court had to interpret it in this manner because of how they have drafted the amendment, right? So in the year 2021, after the Maratha judgment came out,
दैट इज व्हेन द पार्लियामेंट रियलाइज कि ये तो हम इंटेंड ही नहीं करते थे, दिस इज नॉट व्हाट वी इंटेंडेड टू डू बाय एडिंग 342A, ठीक है। तो फिर उन्होंने 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनैक्ट किया एंड दे क्लैरिफाइड द राइट पोजीशन, ठीक है। तो जो पहले पोजीशन थी कि स्टेट डिसाइड करेगा एससीबीसी की लिस्ट, दैट हैज नाउ बीन रिस्टोर्ड, ठीक है। तो अभी दे हैव अमेंडेड 342A, दे हैव अमेंडेड आर्टिकल 366 का 26C, और अब उनका ऐसा कहना है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट सेंट्रल लिस्ट बनाएंगे, है ना, सेंट्रल सर्विसेज भी होते हैं ना, तो उसके लिए जो एससीबीसी की लिस्ट होगी उसको सेंट्रल लिस्ट बोलेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ द यूनियन, एंड दैट कैन बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, बट अ स्टेट लिस्ट विल बी मेड बाय द स्टेट्स ओनली, ठीक है। तो उन्होंने जो स्टेट्स की पावर थी ऑफ मेकिंग दिस लिस्ट, दे हैव रिस्टोर्ड इट बाय द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो उन्होंने बाइफर्केशन कर दिया दो लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। हम आएंगे, हम इन प्रोविजंस को भी देखेंगे अभी, वंस वी आर डन विथ लाइक सम बेसिक्स, we'll come to 2018 and 2021 amendments also, because they're very important, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ, ठीक है। अब कुछ केसेस हैं जो मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में आना चाहिए उनपे, क्योंकि वो थोड़ा उसमें है, there has to be a flow in them, ठीक है। फ्लो नॉट ओनली इन आर्टिकल 15 बट ऑल्सो इन आर्टिकल 16, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा नेक्स्ट क्लास में आना चाहूंगी। मैं आपको एक बार एक ब्रीफ दिखा देती हूँ कि हम कैसे कैसे केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला केस होगा एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का, जहां पे कोर्ट ने कई सारी चीजें डिस्कस की हैं एससीबीसी के बारे में, एंड दे ऑल्सो सेड फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो रिजर्वेशन है दैट कैन नॉट एक्सीड 50%, ठीक है। तो जो सबसे पहली बार उन्होंने जो 50% जो ये लिमिट कभी अगर आई थी, तो वो आई थी एमआर बालाजी के केस से, ठीक है। एमआर बालाजी के बाद कई सारे और इंपॉर्टेंट केसेस आए, जैसे कि राजेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ एपी वर्सेस बलराम, केसी वसंत कुमार वर्सेस कर्नाटका, ये सारे इंदिरा सोनी के पहले के केसेस हैं, ठीक है। इसके बाद आया हमारा सबसे लैंडमार्क केस, अ 9 जज बेंच डिसीजन ऑफ इंदिरा सोनी व्हिच क्लैरिफाइड, ये एक्चुअली जो केस था ये एक्चुअली आर्टिकल 16 पे था, ठीक है, इट वाज नॉट ऑन आर्टिकल 15, बट कोर्ट ने इंदिरा सोनी के केस में क्लैरिफाई किया कि हम जो भी चीजें आर्टिकल 16 के बारे में बोल रहे हैं, दे ऑल्सो अप्लाई एंड दे आर द jurisprudence ऑफ आर्टिकल 15 ऑल्सो, ठीक है। तो इवन दो केस वाज ऑन आर्टिकल 16, it squarely applies to article 15 as well, okay, so that is how we'll see। फिर हम 93rd अमेंडमेंट के बारे में कुछ चीजें देखेंगे, क्योंकि 93rd अमेंडमेंट ने क्या किया है, it has said that state can provide for reservation in educational institutions as well, ठीक है, not just any educational institutions but private institutions as well, ठीक है। तो 2-3 केसेस वहां पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पीए नामदार, टीएमए पाए, और भी हैं काफी, वो हम जनरली वहां पढ़ते हैं माइनॉरिटी राइट्स में, ठीक है, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है। सो दैट इज वेयर एंड वील कवर ऑल दैट।